Hello guys, Vinita this side. I hope you all are fine. You all are doing good. So welcome to my channel. Today we are going to start the basic points, that is the Black Aeroplane, chapter number 3, part 2. So as you know, the lesson Black Aeroplane by Frederick Forsyth that reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how to create problems. In this chapter, the narrator is a pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. Miraculously, he somehow manages to escape with the help of mysterious aeroplane. So guys, in this chapter, ब्लैक एरोप्लेन जो पायलट है वो बहुत ईगर है अपनी फैमिली से, बहुत एक्साइटेड है कि वो अपनी उड़ान भरे और वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए और उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करे। तो सिर्फ एक इस चीज के लिए उसने जो है वो एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया और जिस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए उसको तूफान का सामना करना पड़ा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग, मतलब सही चीज करने की बजाय उसने एक बहुत गलत डिसीजन ले लिया और पता नहीं फिर कैसे हुआ, लेकिन उसको बचाने के लिए आसमान में एक और अ, रहस्यमय एरोप्लेन आया। कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को नहीं पता, बट उसने उसकी बहुत हेल्प की। सो समटाइम्स इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजन। एक बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत टफ हो जाता है एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर, और जो हमारे मन में शंका होती है ना, वो हमारे डर को बढ़ा देती है। सो वी कंसीडर सम हेल्पफुल इंसिडेंट्स टू बी मिराकल्स एंड mysterious. These incidents take us out of trouble and are nothing else but our mind's courage and strength, which takes the form of external factor and takes us out of the doubtful situation. तो कुछ इंसिडेंट हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम बहुत ट्रबल महसूस करते हैं, बट कुछ नहीं होता अगर हम अपने माइंड से बहुत ही साहस और बहुत ही शक्ति के साथ अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो फैक्टर्स हैं जो हमारे सामने ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम उनको फेस करें तो हम इस डाउटफुल सिचुएशन से भी क्रॉस कर सकते हैं। Yes, so such incidents happens with the narrator, the pilot of all Dakota plane, who is flown out of the storm by a mysterious black airplane. वो बोल रहे हैं कि जो ये एरोप्लेन था जो पायलट उड़ा रहा था उसका नाम था डकोटा। तो पायलट क्या कर रहा था, उस ओल्ड डकोटा को उड़ा रहा था, बट वो स्टॉर्मी क्लाउड्स के बीच में ऐसे गिर जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रबल सम प्रॉब्लम जो है ना उसके आगे क्रिएट हो जाती है। दैट सिचुएशन इज वेरी रूड फॉर हिम, दैट he he didn't decide that what is the actual way to cross it. So however, we don't know from where a mysterious aeroplane will come, आएगा और उसकी हेल्प करेगा, and the name of that aeroplane is called the Black Aeroplane. Okay, I hope you understand. So that is only a story about a pilot who feels happy and contented to fly over a city that he is flying from Paris to London. So while taking his flight, he dreams about the long holiday with his family. So he was completely lost in the dreams, and he wanted to go. He wanted to go to the parents, go to the family, and taken the breakfast. Okay, so but sometimes it happens that what we wish it must be not be there every type of situation, कि ऐसा नहीं होता कि हर टाइम ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो कि वो चीज ठीक ही रहे। Okay. So now, before we proceed the summary, we want to know something about that. Like since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here is a story about flying. Since the earliest time, कुछ शुरुआती समय में
जो ह्यूमंस थे उनका सपना रहता था कि वो स्काईज पर विजय हासिल करें। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी उड़ान भरने की एक स्टोरी है। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्मी क्लाउड्स। जो पायलट है वो पहले तो अपने ड्रीम्स में होता है और फिर वो अचानक से एक स्टॉर्मी तूफानी भरे बादलों में गुम हो जाता है। डज ही अराइव सेफ? क्या वो सही सलामत पहुंच जाएगा? हु हेल्प्स हिम? कौन उसकी हेल्प करेगा? सो लेट्स रीड द स्टोरी। ओके, सो अबाउट द राइटर, Black Aeroplane. It is written by Frederick Forsyth. He is an English author and occasional political commentator. English author है और कई बार किसी ओकेजन पे राजनीति को लेकर कमेंटेटर भी के फॉर्म में भी उन्होंने काम किया है। He is the best known for thrillers such as The Day of the Jackal, The Uresa File, The Fourth Protocol, The Dogs of War, The Feast of God, The Returner Everton, The Afghan, and The Cobra. So these are some stories that are the best part of the author. Okay, next. Here we are having some vocab. Here we do have some words that needs to be understand, that needs to be learned. So let's see. Looking forward to, waiting eagerly, immediately, at once, compass, compass, instrument for telling direction, hues, big, risk, danger, twisted, shook, instruments, machine, waved, shook, follow, come after, obedient, one who obeys the orders. Okay, fuel means petrol, diesel, whatever is there that we use to fill it in the vehicle. Frightened होता है, terrified बहुत ज़्यादा डरा हुआ. Runway, the narrow strips the plane lands or taken off from. रनवे होता है जहाँ पर एक छोटा सा रास्ता होता है जहाँ से एरोप्लेन लैंड करता है और या टेक ऑफ करता है. स्ट्रेंजली, बहुत अजीब से तरीके से, यानी ना strange manner, and arrive, pahunchna, reach. Okay, so I hope you have learned these vocab. I'll give you 1 minute, fastly read it. So here we are having some words that is very much necessary to revise, to learn before we started reading the chapter. Okay, so I hope you have done. Next, Black Aeroplane. The Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. कहानी दर्शाती है ऐसे जजमेंट की जहाँ पर क्या होता है कि कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हर किसी की क्या जजमेंट होती है कि वो उसको कैसे क्रॉस आउट कर सकता है. So in this chapter, the narrator is a pilot. इस चैप्टर में नरेटर जो है वो पायलट है. Who is so eager to meet his family and have a good breakfast. Who is very eager, जो बहुत excited है अपनी फैमिली के पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उनके साथ बैठकर नाश्ता करने के लिए. So that he takes the wrong decision of facing the storm. तो इसलिए वो क्या करता है, गलत डिसीजन ले लेता है कि वो stormy clouds को फेस करेगा instead of doing the right thing. सही चीज करने की बजाय उसने wrong decision ले लिया. So miraculously he somehow manages to escape. ये कोई मिरेकल से कम नहीं हुआ उसके साथ कि अचानक से कोई एक एरोप्लेन आया. The name of that aeroplane is called, yes, Black Aeroplane. So from where it comes, from where he wanted to come, we don't know about that because that is totally a mysterious aeroplane. बट जो भी था जैसे भी था, बट अगर वो पहुंचा तो उसने ऑथर की बहुत हेल्प की उस टॉमी क्लाउड से उसको बाहर निकालने के लिए. नेक्स्ट, so here we are having a summary.
The story Black Aeroplane is about a pilot. ये एक पायलट की कहानी है. So protagonist we can say a pilot who feels happy and contented to fly. जो बहुत खुश है और बहुत संतुष्ट है कि वो सिटी के ऊपर से दैट इज स्लीपिंग नाइट टाइम रात के समय में वो ट्रेवल कर रहा है सिटी के ऊपर से. सो ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन. वो पेरिस से लंदन की तरफ ट्रेवल कर रहा है while taking his flight. तो जब उसने अपनी फ्लाइट ले गया है सो ही ड्रीम्स अबाउट द फेस सॉरी ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली. वो सपना देखता है कि वो एक बहुत ही लंबी छुट्टियों पे गया अपनी फैमिली के साथ. सो आई होप you will understand. So here we are having some points like he also fantasizes about the scrumptious breakfast he would have upon landing. कि जैसे ही वो लैंड करेगा तो वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एक ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा. So as soon as he crosses Paris, तो जितना जल्दी वो पेरिस क्रॉस कर सकता था he gets a look of the dark clouds that were a sign of upcoming storm. तो उसने अचानक से डार्क स्टॉर्म्स का लुक देखी दैट वर अ साइन जो उसको ये सिग्नल दे रही थी कि जो अपकमिंग स्टॉर्म की जल्दी कोई तूफान जो है वो आने वाला है. द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक टू पेरिस फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी. जो बिल्कुल सही डिसीजन था वो होना चाहिए था कि उसको पेरिस से वापस टर्न करना है अगर वो अपनी सेफ्टी चाहता है तो. But he being overshadowed by his dreams, लेकिन वो अपने सपनों में इतना ज्यादा overshadow डूब चुका था and not wanting to delay them. वो उस बात को अपनी मीटिंग को अपने फैमिली के साथ जो थी उसको डिले नहीं करना चाहता था. रिस्क द लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर्स. उसने क्या किया अपने साथ साथ बाकी सब पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डाला. एंड हेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म्स. और खुद जाकर वो बोलते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना. तो उसने वही काम किया. वो सीधा अपना सिर उसने उसमें घुसा लिया तूफान में बिना कुछ सोचे सिर्फ अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए उसने put put each and everyone's life in the risk or danger. So everything gets dark. हर जगह बिल्कुल अंधेरा था. He is unable to see. उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था. All his direction instruments stopped functioning. और जितने भी डायरेक्शन बताने वाले उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे डायरेक्शन वो सब आर नॉट फंक्शनिंग. वो काम भी नहीं दे रहे थे. एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन. और उसने क्या किया उसका जो कंट्रोल था जो नियंत्रण था प्लेन से वो छूट गया. When all hope was lost, जब पूरी तरह से सारी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई, he saw another plane whose pilot was more than willing to rescue them. जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई तो उसने देखा कि एक और एरोप्लेन है दूसरे पायलट के साथ जो मेरी हेल्प करना चाहता है मुझे बचाना चाहता है. So the author was panicking as there was very less amount of fuel well left. अब जो ऑथर था ना वो बहुत पैनिक हो गया और उसको ये था कि अब सिर्फ 2 दिन का टाइम है. ओके वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम. And why the timing is so less? Because he had very less amount of fuel. उसके पास फ्यूल बहुत कम था. So the anonymous pilot guided them. Okay, so the anonymous pilot guided them. तो पायलट ने उसको गाइड किया उसको समझाया. आउट ऑफ द स्टॉर्म उसको स्टॉर्म से तूफान से बाहर लेकर गए. एंड डिसअपियर्ड और उसके बाद वो गायब हो गया. एज सुन एज दे सो लाइट. इससे पहले कि थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती वो वहां से गायब हो गया. अपॉन लैंडिंग व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम ऑफ द अदर पायलट. जब उसने लैंड किया तो उसने कॉल से पूछा कि वो जगह पता करना हो.
Yes. So, upon landing करते हुए, when he asked the lady in the control room, जो उसने कंट्रोल रूम में बैठी हुई उस औरत से पूछा कि दूसरा पायलट या दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, so he is left in shock. वो बहुत हैरान हो गई, सरप्राइज्ड हो गई when he she saw that he was when she says that his was the only plane in the sky. तो बहुत हैरान हो गया जब उसको पता चला कि वो अकेला ही ऐसा था जो उस टाइम स्काई में क्लाउड्स के बीच में से झूल रहा था. So some story points in points like the sky was clear from the first point to the last point. We do have some basic points, some main points like firstly the sky was clear when the author was flying his old Dakota aeroplane over France to England. जब वो ये क्लियर किया गया जो ऑथर है वो ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था वो फ्रांस टू पेरिस की तरफ था. He was dreaming of his holiday and looking forward of being with my family and thought to take good English breakfast with his family. उसका सपना था वो सपना स्वप्न में था कि वो अपनी लंबी छुट्टियों पर है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय करेगा जिसको एवरीथिंग कि वो प्रॉपरली ही एंजॉयड ईच एंड एवरीथिंग. सो एवरीथिंग वाज डूइंग वेल. सब कुछ ठीक चल रहा था. इट वाज एन इजी फ्लाइट. बहुत ही इजी फ्लाइट थी. ओके. नेक्स्ट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. सब कुछ अच्छा चल रहा था कंप्लीटली एंड इट वाज एन इजी फ्लाइट और ये बहुत ही इजी फ्लाइट थी यानी कि जिस पर हमने टेक ऑफ किया और लैंड हम बहुत इजीली कर जाएंगे. बहुत इजी उसको टारगेट लग रहा था. सो पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम. अभी 150 किलोमीटर्स था पेरिस. And when he saw the huge black mountains, stormy clouds in front of. Okay. So, nextly, everything was doing well. So, कुछ ठीक चल रहा था. Yes. So now we do have some points like Paris अभी 150 किलोमीटर्स पीछे था जब उसने देखा कि अचानक से बहुत बड़े काले बिल्कुल पर्वतों जैसे पहाड़ों जैसे स्ट्रोम्स जो क्लाउड्स है वो उनके सामने आके खड़े हो. सो नेक्स्ट एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. अब हर चीज बिल्कुल ब्लैक हो गई. द ऑथर कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. जो ऑथर है वो आउटसाइड बाहर की तरफ कुछ भी नहीं देख पाया. यस. सो नाउ एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. सब कुछ ब्लैक हो गया. अब उसको थोड़ा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन के बाद उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड. अब पुराना जो एरोप्लेन था ओल्ड डकोटा वो जंप कर रहा था और घूम रहा था मतलब उसका बैलेंस बिगड़ गया था हवा में. द कंपास रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट सडनली स्टॉप वर्किंग. बाकी सब डॉक्यूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया. इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए सब. Then, in the black clouds quite near him, he saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but he could see it flying next to him through the storm. वो कह रहे हैं कि तब अचानक से एक ब्लैक काले बादलों के पास जैसे ही वो पहुंचा तो उसने
एक और एरोप्लेन देखा जिसकी लाइट्स तो नहीं थी बट वो दिखाई दे रहा था। उसको लग रहा था कि मेरे साथ भी कोई है जो मेरे से आगे या मेरे साथ में प्लेन को उड़ा रहा है। सो ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। अब उसने क्या किया, एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ ऑथर्स डकोटा, इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑथर्स डकोटा, अब वो ऑथर के डकोटा प्लेन के सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर द अदर टू फॉलो, ताकि ये आसान हो जाए उन लोगों के लिए, उसके लिए, किसके लिए, ऑथर के लिए जो उसको फॉलो कर रहा है, जो उसको पकड़ रहा है, उसके आगे पीछे जा रहा है। So suddenly the author came out of the clouds and saw two long strange lines of lights in front of him. अब अचानक से उसने क्या किया, ऑथर ने क्लाउड्स तो बना लिए, बट as we know that he was completely unbalanced. So the black aeroplane suddenly came in from the clouds. और उसने दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइट्स उसको दिखाई और उसको बोला कि that was a runway and airport he was safe. उसको बोला कि बाकी सब छोड़ो, अभी दैट ये जो है आपका जो लाइन वो बना रहा है अपने एरोप्लेन से, so that is called a runway for you, like an airport. So you are safe, you were safe, so you just follow it, you just follow the direction and take out from the clouds. So the author turned to back for his friend in all black aeroplane, but the sky was empty. स्काई बिल्कुल एम्प्टी थी, ठीक है। अब वो जैसे ही वहां तक पहुंच गया सेफली, ठीक है। अब ऑथर की विश थी कि वो अपने जो फ्रेंड है उसकी हेल्प करे ऑथर की। ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा था, ठीक है। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कहीं भी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। ही वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, उसने कंट्रोल सेंटर में गया और उसने उस औरत के बारे में पूछा, वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, जहाँ पर वो थे और जहाँ उसकी वो थी इंचार्ज, लाइक वी कैन से दैट ना कि इंचार्ज संभालना हर एक चीज का। तो ही वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल। अब उसको उसने देखा कि स्काई में कोई भी नहीं है, अब एक एरोप्लेन तो था जिसने उसकी हेल्प की थी। सो वो कंट्रोल इंचार्ज जो थी, कंट्रोल इंचार्ज वुमेन, उसके पास गया और उससे पूछा कि ही वॉज, कि वो कहाँ है प्लेन और उसका पायलट जो था वो कौन था। सो सडनली शी लुक्ड एट द ऑथर वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत हैरान होकर ऑथर को देख रही है और फिर हंसी। शी सेड, अनदर एरोप्लेन, हाउ इज इट पॉसिबल, अप देयर इन द स्टॉर्म, क्या इस तूफान में कोई और भी एरोप्लेन था? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा। Yours was the only one I could see on the radar. Radar is the instrument that shows the direction. कि जितना मैं देख पा रही हूँ सिर्फ एक आपका ही रेडियो जो था वहां पे वर्किंग था। So, who helped the author to arrive there safely without a compass or radio? तो ऐसा कौन था जिसने ऑथर की हेल्प की बिना किसी कंपास के और बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक्स, और उसके पास कुछ ज्यादा फ्यूल भी नहीं था टैंक में। सो हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? ऐसा कौन था जिसने उसको कंप्लीट स्टोरी दिखाई है। एंड वी डू हैव समथिंग लाइक कि वो बहुत स्ट्रेंज हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हेल्प एक्चुअली में की किसने है विदाउट लाइट्स। सो हेयर वी आर हैविंग अ टॉपिक फ्रॉम रिकैपिचुलेशन, मीन्स जो अभी तक हमने पढ़ा है, इफ यू फाइंड एनी आंसर्स फ्रॉम दैम you just stick it out. So first question is, what was coming up in the east behind the pilot? क्या आ रहा था ईस्ट में? moon, stars, sun. So you have to select any of the answer. Like which plane was the author flying? Author कौन सी plane को चला रहा था? Yes, Dakota. Yes. Next one. Which plane was the author flying? Dakota. Which country was flying pilot flying over? France.
Yes. Which country did the pilot belong to? Yes. So the next point is which country was the pilot flying over? Next, which country did the pilot belong to? Pilot कौन सी country से belong करता था? Next point, what happened when the pilot had covered a distance of 150 kilometers from Paris? क्या हुआ जब पायलट ने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया? Inside the clouds, how was everything? कैसा था सब कुछ? And what happened as the plane entered the storm clouds? क्या हुआ कि जब उस plane ने enter किया stormy clouds में? So what was happened there? Next is when the author's plane was caught in the storm, who came to help him? कौन आया था उसकी help करने? So according to me, yes, that is a we can say that another aeroplane. Another aeroplane, yes. So how did the author follow the strange aeroplane? कैसे उसको follow किया? Like an obedient boy? Yes. So what made the pilot frightened again while following the strange aeroplanes? किस चीज ने उसको दोबारा से डरा दिया था? The density, the shortage of fuel, the technical problem of the engine. तो ये तीनों ही चीजें थी उसके साथ कि उसका फ्यूल का भी शॉर्टेज हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो गई और उसको डेंसिटी भी पता चल गई थी कि स्टॉर्म कितना भयानक है. Okay, so in this video we completely read out each and everything about the black aeroplane. So he is only flying from Paris to London. So while taking his flight, he dreams about his family. But as soon as he crosses Paris, he gets a look of the dark clouds that were a sign of upcoming storm. And we do have anything else? Yes. So जैसे उसने ब्लैक क्लाउड्स को मतलब उसने देखा कि मैं एक तूफान में फंस चुका हूँ, तो राइट डिसीजन वुड हैव बी टू टर्न बैक. अब राइट डिसीजन तो होना चाहिए था वहां से वापस जाने का, बट वो नहीं गया. And he was very shook when the girl, the lady from the control room says that he was the only plane in the sky. कि भाई एक ऐसा जिसका प्लेन जो है वो फंक्शंस में या कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाती है तो काम आ जाता है. So that is the story only from this chapter. So I hope you will understand it completely. So in next video we will learn the next point. So thank you. Have a nice day.